Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to do chapter number 3, the practical part of the bond valuation. I will be covering all 23 questions that is given at the end of the chapter, and I know I haven't covered the basics, I haven't covered the formulas, and I will be writing all the formulas which are required to solve these particular questions. And by the end of the day, you will be able to solve maximum question, and few of the questions that I have cut copy pasted are your exam pattern questions. So I believe this video will be very helpful for the exam purpose. Let's try to understand the very basic fund over here. Okay? If I'm getting an interest for 3 particular years and I need to find the value of bond today, I need to multiply these income with their present value factor. Okay? In order to bring these values to their terms. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ योर मेच्योरिटी पीरियड, यू विल ऑल्सो गेट योर रिडम्पशन वैल्यू. ठीक है, तो आप रिडम्पशन वैल्यू को क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके आप उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, अब लेट्स से ये ही सेम थिंग हैपेंस फॉर 20 years. डू यू रियली थिंक कि लोगों के पास इतना टाइम है कि वो सबकी इंटरेस्ट इनकम ऐसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देन उसका सम करके दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? नो. तो हम क्या करते हैं, हम सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम लेते हैं, विच इज कॉल्ड द एन्युटी फैक्टर. ठीक है, so this is the important formula that you need to understand before we actually solve the question. The present value factors and the annuity factor will be given to you in the question paper, and you don't have to calculate by yourself. And even if you have to, तो ये बहुत ज़्यादा simple है. let's say 10% का फर्स्ट ईयर का मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1.1. तो आप कैलकुलेटर पे अगर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करोगे तो it will come out to be 0.9099, I guess. So that would be the present value factor for 10% for the first year. Let's try here only. See, 1 divided by 1.1. 1.1 क्यों किया मैंने? 1 plus r. 10% रेट लिया था, ठीक है, yes. So it will come out to be 0.909. Let's keep it here only. First question, the value of the bond is 1000. The coupon rate is 12%. Okay, see, 20 years का आ गया, ठीक है. अब मुझे value of bond निकालनी है. Value of bond is nothing but the interest income that I am getting into their annuity factor. Why? Because मुझे सबको present value मिलाना है, plus redemption value. Redemption value को मैं present value factor से करूंगी because एक ही साल का, ठीक है. तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है, 1000 इंटू 12% इज 120 इंटू एन्युटी फैक्टर. अब मैं एन्युटी फैक्टर किसका देखूं, मैं एन्युटी फैक्टर देखूंगी 20 years का फॉर 14%. ठीक है, वी विल लुक एट द टेबल, वी विल जस्ट पुट ऑन द वैल्यूज. रिडम्पशन, इफ नथिंग इज मेंशन, कैन आई अज्यूम कि ये पार पे ही रिडीम होगा, तो 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. लेट्स चेक आउट द वैल्यूज. सी, मुझे सबसे पहले चाहिए था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. कितने का? 20% का, सॉरी 20 years का, राइट, 20 years का फॉर 14%, राइट. 14% का 20 years, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 0.073. 0.073. Okay, and I have to check the annuity factor just like that. Annuity factors, these are my annuity factors. 14% for 20 years, this is 6.623. 6.623. let's calculate it. It is 120 into 6.623. This will come out to be 794.76 plus 1000 into your 0.073. ठीक है, प्लस
794.76. This is coming out to be 867 approximately 0.76. This is my value of bond. Let's check the answer. Okay. The answer of the first is 867.76. Okay. Now let's try to solve the second question. In case questions are similar, I'll just leave and discuss it and leave it. Okay. अब इसमें क्या बोला है 1000 का वैल्यू है again 12% is the coupon rate, maturity again in 20 years and currently sells at 85%. Is it desirable investment or not? Required rate. See, it is again very easy. तो अब मैं क्या करूंगी, इसका मुझे सिर्फ ये देखना है 850 इसका सेलिंग प्राइस है. अगर इसकी वैल्यू 850 तक आती है तो आप खरीद लो इसे. ठीक है. अगर 850 से कम है इसकी वैल्यू देन यू शुड नॉट बाय इट. ठीक है. द बॉन्ड इज ओवर वैल्यूड अदरवाइज. ठीक है. तो लेट्स से वैल्यू कैसे निकालोगे. वैल्यू वुड बी वेरी सिंपल. इंटरेस्ट 1000 into 12% is the interest. Then annuity factor. Annuity factor कौन सा लोगे 20 years का 15% पे annuity factor ले लेंगे प्लस रिडम्पशन. रिडम्पशन कितने पे हो रही है 1000 पे. क्या लूंगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. कौन सा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेक करूंगी 20 years पे 15%. ठीक है. तो आई होप अब हमें देखना आ गया कि हम ये वाला प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे. ठीक है. तो हम इसे कैसे करेंगे. लेट्स डू इट फ्रॉम हियर ओनली. देखो इसने भी यही किया 120 मतलब जो मेरा इंटरेस्ट था उसको एनुइटी फैक्टर लेना है कितना 15% फॉर 20. यही हमने किया है 15% फॉर 20 years एंड जो रिडम्पशन वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया है फॉर 15% फॉर 20 years. तो अगर ये वैल्यू अब आई है 812.80 राइट. The value is coming out to be 812. Now the value of bond, let's try to understand the conclusion of this. क्या conclusion निकला है वो समझते हैं, वो ज्यादा जरूरी है. ठीक है. The value of the bond is 812 and the selling price is 850. मतलब आप 812 की जो चीज है उसके लिए आप 850 पे कर रहे हो. So do you think, is it actually desirable that I should pay? Is it not overpriced? Yes, it is overpriced. So ideally, you should not buy such kind of bonds. Okay, let's read the answer. ये क्या कहते हैं? The value of bond is this. So it is lower than the current selling price. Therefore, it is overpriced and it is not at all desirable to, invest in such particular bond. Let's move on to the third question. What does it say? Again, 1000 का bond है, interest 12% दे रहा है, required rate of return is again 11%, maturity period is 20 years, okay, and it sells at a premium for 5%. Premium का मतलब हो गया 1000 plus 5%. It would be, I guess, 1050. ठीक है. अब अगर value of bond comes, value of bond is coming out to be more than 1050, then you should again buy it. In case अगर आपकी value कम आती है और आपसे वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, you should not invest it. तो आप इसे solve कैसे करेंगे? I guess after the first question, we can solve this question very easily. But still, let's look at it. वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इंटरेस्ट लेंगे. कितना आएगा 120. उसका क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर कितने साल का 11% फॉर 20 years. ठीक है. रिडम्पशन वैल्यू वुड बी एट 1000. क्या लूंगी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 11% 20th year. ठीक है. लेट्स चेक जो हमने लिखा है वो सही है नहीं. सो 120 के लिए उसने एनुइटी फैक्टर लिए, 1000 के लिए उसने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिए. दिस विल कम आउट टू बी 1079.56. ओके.
Now, what does it mean? Again, conclusion, as I say, is very important. The value which you are paying is this, but the worth that you are getting while paying just 1050 is 1079. And of course, now I can say that it is underpriced and you should definitely invest in such kind of bond. देख लेते हैं. See, value इतनी है and उसका price इतना है. So of course the investment is underpriced and hence it is desirable that you should invest in such particular type of bond. Now let's move on to the fourth question. Mr. Tiwari purchased a bond for ₹900. उन्होंने खरीदा है 900 rupees का with a coupon payment of 150. तो ये उन्हें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है. Now उनका selling price है 1050 after 1 year. Okay. What is the holding period return? अच्छा, holding period return is a question that I have covered in, I guess, video 1 or 2. ठीक है, we will solve here also, but the basic formula of holding period return is that सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखते हो, मतलब whatever the return, ठीक है, इक्विटी का निकाल रहे हो तो आप डिविडेंड देख लेना. डिफरेंस, दैट इज द कैपिटल एप्रिसिएशन. वो कैसे देखोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने का खरीदा था और कितने का बेच रहे हो, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस एंड इनटू 100. ठीक है, तो वैल्यू कॉम्पनसेट करते हैं. इंटरेस्ट 150, सेलिंग प्राइस 1050, कितने का लिया था? 900 का. परचेज प्राइस वाज 900 into 100. Let's do this. 1050 minus 900 plus 150 divided by 900 into 100. The return is 33.33% currently. ठीक है, अगर आप 800 में सेल करते तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा होता, बट इस कंडीशन में आपको गेन हो रहा है. सी, अगर यहाँ पे 800 होता तो इसकी जगह सिर्फ 800 आ जाता एंड इट वुड हैव कम -100. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा होता. लॉस भी नहीं, मतलब रिटर्न कम मिल रहा होता आपको, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होता. तो दिस वुड हैव बीन 150 minus 190 into 100. ठीक है, so this will come out to be 50 upon 900 into 100 if it would have been sold at 800. Now let's check क्या है. होल्डिंग पीरियड रिटर्न में एक और टर्म होती है एनुअलाइजिंग रिटर्न्स. ठीक है, ये 1 ईयर के लिए था इसलिए आई डिड नॉट एनुअलाइज इट. 33.33%. सी, इसने भी एक किया 150 plus 800 minus 900 divided by 900 into 100. Okay. Let's move on to the fifth question. Mr. Sachin being offered a scheme in which he has to deposit 18250. मतलब आज आप इतने पैसे डिपॉजिट करो, ठीक है, and at the which will give him year in return of 5000 each. Okay, for the next 5 years. मतलब अगर आज मैं 18250 देती हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 5 years तक 5000 मिलेंगे. ठीक है, ओके. अगर मैं अभी देखूं 1 2 3 4 5, या ये तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि इतने पैसे दे रही हूँ इतने मिल गए. ठीक है, नहीं, यू विल नॉट डू लाइक दिस बिकॉज यहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसिडर नहीं किया, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ time value of money has not been considered over here. So you need to bring these all values in present value in order to compare them. ठीक है, एक बार ये पूरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, देन हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी है और एक्चुअल में हमें देने कितने हैं. ठीक है, तो हम कैसे निकाले? एक का ही निकाल के देखते हैं. 5000 इंटू 10% का निकालते हैं. 10% का मैं क्या निकालू? प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी फैक्टर. ठीक है, एन्युटी फैक्टर कितने साल का? फॉर 5 years फॉर 10%. लेट्स चेक. एन्युटी फैक्टर फॉर, मैं भूल गई, सॉरी, 10% फॉर 5 years, दैट इज 3.791. 3.791. लेट्स कैलकुलेट कितना आ रहा है. 3.791 into 5000. This is coming out to be
8955. This is the true value that you will receive, and this is what you are paying today. What do you think? Should you go with the scheme or yet not? Yes, you should go. Why? Because you have to pay less, and the worth or the value that you are getting, throughout this 5 year is more. So you should invest. Let's check the answer. इसका आया 18955, हमारा भी यही आता है. ठीक है. तो इन्वेस्टर शुड एक्सेप्ट द ऑफर ओनली इफ द रिक्वायर्ड रेट इज 10%, बिकॉज अगर आप 12% पे करोगे तो 18025 आ रहा है, विच इज नॉट द आइडियल सिचुएशन फॉर अ इन्वेस्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. VK Arora is considering investing in a bond. Currently selling price उस bond का है 8785.7. ठीक है. The bond maturity period is 4 years. Face value of the bond is 10,000 and the coupon is 8%. The next annual interest payment is due 1 year from today. The appropriate discount rate is 10% that you have to use. You have to find the value of the bond. Very simple. कैसे निकालोगे value of the bond? Coupon 8%. This is my interest payment. किससे करूँ? Annuity factor for 4 years or 10% plus redemption value. Redemption value is nothing but, I guess, 10,000 only. This would be a present value factor for 10% for 4 years. ठीक है. Let's check it out. कितना रहे? 10,000 into, sorry, this would be my interest. Okay. This will come out to be 800 into annuity factor. किसका देखना है मुझे? 10% for 4 years. Annuity factor for 10% for 4 years, 3.170. 3.170 plus I have to see the redemption value 10,000 into present value factor देखना है for 10% for 4th year. This is 0.683. 0.683. Now let's quickly solve this. क्या आ रहा है इसका आंसर? ठीक है. 800 into 3.170, 2536, and this is 10,000 into 0.683 plus 2536. This is coming out to be 9366. Now see, what is the conclusion? This is the value of the bond. This is the price that you are paying. So obviously you should, because the value of the bond is much higher than what is the current price of that particular bond. So yes, you should definitely invest in such particular bond. Now what is YTM? YTM is the actual return. See, there are two methods to compare the bonds. Either you find out the value using the present value or the present value factor, annuity factor. आप value निकालो bond को, आप compare करो, and then you decide. The next is the YTM. Okay, how will you calculate the YTM? Let's do that. YTM has two methods. Either you use the hidden trial method or you use the approximation method. Let's try to do the approximation method. Methods to calculate the YTM. Either you use the trial and error approach or you use the approximation approach. Okay, we will be using the approximation method over here. ठीक है. तो what is the formula? Coupon plus redemption value minus purchase price divided by n, that is number of years, then redemption value plus purchase price divided by 2. ठीक है. तो YTM कैसे निकलेगा इस केस में? Coupon is 8% का 10,000, that is 800 plus redemption value. Redemption value is, I guess, 10,000 only. What is the purchase price? 8785.07 divided by n. This is 4. ठीक है. Into 100 कर देंगे बाद में. अब n
नीचे क्या डिनोमिनेटर में रिडम्पशन वैल्यू प्लस परचेज प्राइस divided by 2. See, this is how you have to calculate the YTM. Let's check the answer because ये calculation हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? क्या किया इसने 800 plus redemption value minus purchase price divided by n, then again redemption plus purchase price divided by 2. So this will come out to be 11.75%. Okay. Now let's try to do 7th question. Pico Textile is considering to issue 1,000 debenture. Maturity 6 years है. Coupon rate मुझे अलग अलग दिए हुए इस बार. Current market interest rate is 14%. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये लिखा, सॉरी. एंड coupon, that is the interest payment, is 10% for initial years. That is 100. Sorry, this is 100. This is 100. This will come out to be 120. This will come out to be 120. 13% हो गया तो 130 and 130. अब क्या करूं? अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के देखेंगे. 14% का फर्स्ट ईयर पे. सी, आप इसे एनुटी फैक्टर से आई वुड नॉट प्रेफर बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी इंटरेस्ट पेमेंट्स चेंज हो गई है, इसलिए हम एनुटी फैक्टर अब यूज नहीं कर रहे. जब मेरी इंटरेस्ट पेमेंट कांस्टेंट थी देन आई वाज यूजिंग द एनुटी फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए फॉर द रेट ऑफ 14% एंड दीज आर 0.877 ऐसे लिखेंगे. ठीक है, 0.877, 0.769, 0.675, 0.592 and 0.519. I hope I have written 1 2 3 4 5. No, 0.456. ठीक है, तो आप ये करेंगे, आप अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यू विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी वैल्यू एंड रिमेंबर इसे 1000 भी लेना है बिकॉज 6th ईयर में आपका रिडम्पशन भी होगा. ठीक है, एंड देन यू विल टेक सम, तो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू. वैल्यू वुड बी माय इशू प्राइस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से we calculate the issue price if the company proposes to provide a yield of 15% per annum. तो कुछ नहीं करना, जहां पे ये हमने यहाँ पे 14% का लिया हुआ है, हमें सिर्फ 15% के फैक्टर्स लेने हैं. ठीक है, what would be the effect of the coupon yield if the issue price is higher or lower than. Let's try to understand this through the answer only because इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है. ठीक है, हमें सिर्फ कंक्लूजन पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. देखो इसने भी क्या किया है, इसने भी जो हम करते हुए आ रहे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिए. ठीक है, उसका सम निकाला मल्टीप्लाई करके, तो इट विल कम आउट टू बी 899.36. देन अगेन सेम चीज इसने क्या किया है, 15% पे किया. ठीक है, 15%, तो it will come out to be this. Now let's try to solve 8th question and it is very easy. ठीक है, इसमें क्या बोला है, a company issued 12% bond with 3 years of maturity. Bond is redeemable at par of 1000. What would be the value of the bond assuming कि interest payment annually. तो annually हम नहीं करेंगे because अभी तक हम सारे questions annually ही करके आ रहे हैं and it is very easy. जैसे अभी तक हम निकालते हुए आ रहे हैं, we will do like that only. हम semi annually करते हैं. ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ. ठीक है, सी, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वुड बी इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, एंड और जो आप एनुइटी फैक्टर देखोगे इंटरेस्ट का, वो कैसे देखोगे, वो देखोगे केडी डिवाइडेड बाय 2. मतलब जो भी रेट होगा उसे आप डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे एंड जो भी मेच्योरिटी पीरियड होगा उसे इनटू 2 कर दोगे. तो एक बार 2 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो वैसे प्लस. अब रिडम्पशन वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखते हैं, किसका देखोगे, अगेन जो ये वाला फैक्टर कंसिडर करो वही यही करना. ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इंटरेस्ट इज 120 डिवाइडेड बाय 2. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 80 डिवाइडेड बाय 2 मतलब
14% डिवाइडेड बाई 2, 7% का मैं देखूंगी फॉर 2 into n, मतलब 2 into 3, 6 years का, प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1000. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसका देखूंगी, 6 years का फॉर 7%. लेट्स सी इसने क्या किया, इसने भी यही किया, I by 2 that is 60, present value factor for 7% for 6 years and 1000, 7% for 6 years. Okay, this will come out to be 952.02. Let's try to do the ninth question. Ninth question कहता है, an investor is considering the purchase of the following bond, जिसका face value ये है, coupon ये है और maturity ये है. Maximum price he is ready to pay. Always remember, एक इन्वेस्टर उतना ही मैक्सिमम पे करना चाहेगा जितना उसकी वैल्यू होगी. ठीक है, तो अगर इसे लॉजिकली देखे तो इसमें कुछ नहीं कर निकालना, सिर्फ वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, एंड दैट वुड बी द मैक्सिमम प्राइस जितना मैं पे करूंगी. ठीक है, तो अभी जैसे हम निकालते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, 100 into 11% is 11. क्या देखूं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 13% for 3 years plus redemption 100 into present value factor for 13% for third year. देख लेते हैं आंसर, 11 into present value annuity factor, so this will come out to be 95.27. this is the maximum price that I am ready to pay. अगर वो 97.60 होता है तो मैं, if the bond is selling for this, what yield, सबसे पहले तो मैं ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी. क्यों, क्योंकि ये ओवर प्राइस्ड है. मुझे अगर इतने की वैल्यू मिल रही है तो ये ओवर प्राइस्ड है. अब मुझे वो कहते हैं यील्ड निकाल दो. ठीक है, यील्ड कैसे निकालते हैं, जो भी हमने पीछे फॉर्मूला किया. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड यू कैन एक्चुअली यूज इट. तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या था, इंटरेस्ट प्लस redemption value minus purchase price divided by redemption upon n, redemption value plus purchase price divided by 2. What is the interest, is the 11, redemption value is 100, purchase price is 97.60 divided by 3, then 100 plus 97.6 divided by 2. I know it is very dirty, but I hope it is clear. We have done it in the last question only, I guess. So this would 11.94 would come out to be my yield. Okay. Now let's try to do the 10th question, and this is the last question for this particular video. Rest of the 13 questions I will be covering in the next video. Following information is available in the respect of bond. Face value is 1000. Coupon rate is 8%. Maturity is 10 years. And market price is your 1140, and it is callable in 6 years at rupees 1100. This is interesting. See, सबसे पहले तुम्हें YTM तो निकालना आ गया. Interest plus redemption value minus purchase price divided by n upon redemption value plus purchase price divided by 2. ठीक है, YTM is very easy. Interest is 1000 का 8%. Redemption value is 1000. Purchase price is 1140. N is 10 year. ठीक है, तो यही किया होगा इसने. देख लेते हैं. 80 this, तो 6.16. तो approximation method यूज करके I got a YTM of 6.16. अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसे ट्रायल एंड एरर अप्रोच से करती हूँ. ठीक है, मैं दो फैक्टर्स लेती हूँ, एक 6% लेती हूँ और एक 7% लेती हूँ. देन आई यूज द फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन. ठीक है, दिस इज द इंटरपोलेशन फॉर्मूला. इन ऑर्डर टू फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट परसेंटेज, दिस विल कम आउट टू बी 6.09. सी, इसमें क्या हुआ, व्हाट इज द फॉर्मूला ओवर हियर इज, first of all you consider the lower rate of interest that you have taken, 6%, plus उसके ऊपर क्या तुम्हारी वैल्यू आई, माइनस कितना सेलिंग प्राइस था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट्स एंड व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज किया. यू गेट 1%, उसके अराउंड यू टेक 2%. ठीक है,
In order to find the very accurate rate, you use the interpolation method. Now, what is YTC? YTC is callable option. Callable option क्या होता है? Callable option is nothing but company has the right to call and tell you, let's say in 6 years के बाद, they can redeem your shares at any day. ठीक है, before 10 years, but after 6 years. So in between, they can call you, they can redeem your share at 1100. तो इसमें कुछ नहीं होता. You use the same formula. It's just that आपका redemption value would become 1100 instead of 1000, and everything else will remain same. ठीक है. N आप 10 ही लेंगे. ये maturity period होता है. ठीक है. And same. क्या करोगे? सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज करोगे, एक परसेंटेज निकालोगे, 2% उसके अराउंड लोगे. लेट्स से 6% आया तो 6.04 आया तो 6%, 7%. यूज दीज वैल्यूज, यूज द इंटरपोलेशन एंड फाइंड द एक्यूरेट रेट. यही किया इसने. अप्रोक्सीमेट से एक वैल्यू निकाली, 2% लिए, उनकी वैल्यू निकाली. You use the interpolation formula and you found out the most accurate value. Okay. Now this question we will do tomorrow. Okay. I'll upload the next video very soon. हम बाकी के questions ठीक है उस video में करेंगे. Otherwise this video will become very long. Thank you and keep watching. I will be uploading maximum videos as soon as possible.